as a software engineer since a lot of years, but professionally it's been around 4 or 5 years. But if we talk about working on side projects, it's been more than 10 years, I can say. Yeah, I'm currently working as a software engineer at Dubizzle, and I'm also a mentor at Ready Set Tech. Voice slow are okay. Is it better now? Okay, great. Right, so I was just saying that I'm currently a software engineer at Dubizzle and also a mentor at Ready Set Tech. Yeah. So this session will be about working on side projects. Um, so side projects are something that you do apart from your daily job, right? So as a professionally, you might be working in an office, but side project is something that you are doing, just a weekend hack or spending some months on an idea that you got and just using anything that you want to create, something that you want, just pure freedom. In this particular session, I'll be talking about side projects that I have been building. And my motivation for creating side projects was to actually just have a business, right? So whenever I got an idea, I just thought about, okay, this is a potential business, so let's go ahead and um, create a project, create an app, anything. So yeah, so let's start by talking about the importance of side projects. Why do they actually matter? So let's say that a person is working at a job and they have a very specific job. They are working on React.js, Node.js, let's say 3, 4 technologies, anything they want. Whenever they're working professionally, they're not able to work on some new technology that they are now seeing it's trending, right? Because you're dictated by your top level management or your manager that okay, we are going to use this technology to create this project. These are the requirements. Side projects are a great way to build your own skills. So if you have an idea and you are saying, okay, so let's say Next.js just came into the market. So you'll be like, okay, so Next.js is coming to the market. I have this idea. Why not just go ahead and create some project with it? It's very important to link your skill with a project. So if you say that, okay, I've read the documentation of X framework and now I know about it. So that's not very concrete. Whenever you're going to tell it to someone, they're going to be like, okay, do you have a domain? Is it up somewhere? Do you have a project on which you've worked on it? You know. So side projects are a great they are a great way to build your portfolio. So we can say that side projects help you build in marketable skills. You can say that I've built this social network on this technology. So that's how you market your skill. Side projects also help in creating opportunities. So opportunities in terms of learning, not just the technology, but opportunities in learning about something other than your own domain. So let's say that you worked on a side project, it's really great, and now you want to, get some customers for it or something like that. Now this side project just created an opportunity for you to learn about sales and marketing. How would you go about marketing your own product? That's also an opportunity. They also create opportunities for you to build your network. So let's say you have some idea, you want to build a project on it, but you're not really good at design. So and you know that there's your friend who's really good at video editing, making UI UX and stuff like that. So you'll go ahead, you'll talk to them. Even if it's not your friend, he's someone in your university or she is someone in your university, stuff like that. The third most important thing that I feel of why they matter is having your personal fulfillment. So ऐसा बहुत सारी बार होता है कि we question ourselves कि am I even doing the right thing? मैं क्या सुबह उठ के 9 बजे जा रहा हूँ, वही कोड लिखे जा रहा हूँ, 3 4 घंटे कोड लिखा घर आ गया सो गया. Is it really worth it? Do I even have some impact? तो ये जो सारे questions हैं, all these questions, they are all answered by side projects. You are building something that you think matter. अभी जरूरी नहीं है कि लोगों को लगता है मैटर करता है नहीं करता. So when you have that something in your life in which you are रोज जा रहे हो फजूल में 9 to 5 के अलावा जाके you are working on something that you feel deeply about, so that gives you
अब पर्सनल फुलफिलमेंट लगता है यार कि कुछ इम्पैक्ट तो क्रिएट हो रहा है, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तब आता है when you are actually able to complete a project. So when you complete it, that sense of achievement that you achieve, that gives you a great boost in confidence, because you see that you you prove it to yourself that you are capable of having an idea and then going through the process of completing it as a full-fledged project. So side projects in turn directly give you a great boost in confidence, and they provide you with your self-worth, your value, that you bring something to the community. And the fourth one is really drive. So when you have a lot of skills, when you have had a lot of opportunities, learning opportunities, and you also have built your own confidence, ultimately that will help you in accelerating your own career growth. So when you are in amongst a lot of peers in your office, and your manager will see, okay, this guy has some initiative, he has some great ideas, he knows what prioritization means. All of these things are learned from working on your own specific projects. खुद से करियर लैडर में ये सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस तरह के डिसीजंस आते ही बड़े लेट है स्टार्टिंग ऑफ द करियर्स में, 2 3 4 years में all we are all we are burdened with is requirements coming in from RBAs or marriages. So these are some generic points of why they matter. I'll talk about now some of the projects that I worked on, and I'll talk about how each project helped me in being better at the next one. Right. So let's talk about the first one. The first one is called Help Exchange. So हुआ ये था कि I was really small at this time, 12, 13 years. So I wasn't really good at designing. I'm still not good at designing. So I was thinking, also I did not have any money. So I was thinking कि I can't pay 1 lakh, 2 lakh to a designer to, come up with a website design कि भाई design something for me. So I thought of an idea, ऐसा कोई platform होना चाहिए जहाँ पे I can say कि okay, I'm good at website designing. I'll create a website for you. Sorry, development. I'll create a website for you, and in turn, you should create some designs for me. So instead of his exchanging money, you will exchange your skills. So the whole idea was this behind Help Exchange. Um, this was also the first project that I was able to complete. इससे पहले बहुत सारे ऐसे आइडियाज आए थे जो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया बनाने शुरू किया और फिर बीच में वो मोटिवेशन खत्म हो गई, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ केस होता है कि दिस इज ह्यूमन नेचर। तो हुआ ये कि जब ये कंप्लीट किया मैंने तो मुझे रियलाइज हुआ कि द ओनली रीजन आई वाज एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट वाज बिकॉज इट वाज मोटिवेटेड बाय पर्सनल पेन पॉइंट। मतलब मुझे पता था ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट कर लेगा अगर तो फिर कोई बंदा होगा जिसको मैं बोलूंगा प्लीज मेरे लिए डिजाइन कर दो एंड आई मेक अ वेबसाइट फॉर यू। तो वो एक अगर जब तक पर्सनल पेन पॉइंट आपके अंदर रहता नहीं है ना, कि जो एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप रेजोनेट करें, जरूरी नहीं है इस वक्त दूसरे लोग करें, तब तक यू डोंट गेट दैट मोटिवेशन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। लेसन नंबर 2 उसमें मैंने ये सीखा था, एज आई सेड कि मेरा साइड प्रोजेक्ट की मोटिवेशन वाज टू क्रिएट अ बिजनेस। तो मैंने बोला यार सही है, अच्छा है, प्रोजेक्ट बन गया, नाउ लेट्स गेट कस्टमर्स। कस्टमर्स लेने के बाद ही तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास आई डोंट हैव अ वे टू अर्न फ्रॉम दिस। तो हाउ एम आई इवन गोइंग टू create a business from this, right? So lesson number 2 pretty basic, but if you think about it, बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं जिनमें बिजनेस मॉडल इतना अपेरेंट होता नहीं, like this is one of those ideas, जिसमें subscription model you can use, but that's not really attractive. So anyways, the lesson that I learned from it was कि even if you have the product, you should know how to earn from it. Again, in terms of just a startup idea, if you are trying to build a startup from a side project, जरूरी नहीं है। The third lesson was कि इस प्रोजेक्ट में आई वाज वर्किंग विद अ टीम। तो अब टीम सुन के ऐसा लगेगा कि 6 7 लोग ऐसे नहीं थे, तो एक ही था, मेरे भाई के साथ में कर रहा था। फॉर्चुनेटली आई हैड दैट एडवांटेज। तो वर्किंग विद अ टीम एक अलग ही लर्निंग देती है आपको। तो व्हेनेवर यू आर विद अ टीम, यू लर्न अबाउट कि टास्क डिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा होता है कि आपको पता तो है करना क्या है, बट डिवाइडिंग द टास्क, नोइंग डिपेंडेंट क्या है नहीं है, तो क्या प्रायोरिटाइज करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जो है आपस में कोलैबोरेट कैसे करना है, क्या कम्युनिकेशन रखनी। तो
ये लेसन नंबर 3 जो मैंने इससे लिया था कि यार वर्किंग विद अ टीम ना एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। उसमें मोटिवेशन भी एक अलग है। यू आर सीइंग अदर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम डूइंग देयर पार्ट। दैट आल्सो मोटिवेट्स यू कि आई शुड बी डूइंग द सेम थिंग, आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम इसमें, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई कंप्लीटेड। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रॉब्लम मुझे तो फेस हो रही थी, मुझे पता है। तो आई नो दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। आई डिडंट नो कि दूसरे लोग को भी ये हो रही है नहीं हो रही। मतलब I know this problem exists. Are there other people? I didn't even think about it. Are there other people who are facing the same problem? और मैंने जहमत भी नहीं की कि मैं जाके किसी से पूछूं. I just went ahead and developed it, and of course it failed because I did not do a good market research. So now let's move to Foodwise. After help exchange, obviously now I was looking for problems जो दूसरे लोगों को आए, not just me. So Foodwise की motivation भी उधर से ही हुई शुरू. Um, when I was doing my internships, so I saw a lot of people during lunchtime deciding what they want to eat. Um, they spent an hour and a half in deciding कि नहीं बर्गर नहीं ये नहीं वो नहीं है. और ये तो अभी सिर्फ फूड आइटम डिसाइड हो रहा है, मंगवाना कहाँ से है वो एक अलग कहानी. तो they spend a lot of time deciding from where they want to eat. But this was something that I discussed with a lot of people and they say हाँ हमारे ऑफिस में भी होता है. So Foodwise की motivation was to create a platform which will help people in deciding what they want to eat. Simple. सही है, because I saw problem है, चलो प्लेटफॉर्म बना देते हैं. तो अब फूड वाइज एक ऐसी प्रॉब्लम मैंने देखी है और मैंने बोला सही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, चलो प्रोडक्ट बना लो. इसमें मसला ये हुआ कि मैंने देखा तो सही कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. मैंने उनसे अगेन पूछा नहीं कि इज दिस प्रॉब्लम इवन रियल, बिकॉज टर्न आउट दैट पीपल एक्चुअली एंजॉय डूइंग इट. सो जितना भी उनको वो यार तुम लोग डिसाइड नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, दिस इज समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिस लाइफ कि भाई 1 बजेगा 1:30 एंड देन दे विल गो एंड डिसाइड, एवरीवन विल डिसाइड. सो इट लुक्ड लाइक अ प्रॉब्लम, इट वाजंट वन. पीपल weren't accepting it as a real problem. So इसमें मैंने सीखा कि it was really important for you to interview potential users. Um, the second lesson was मैंने इतना सारा डेवलप कर लिया. I've spent time in developing a lot of irrelevant features. Settings पेज बन रहा है और प्रोफाइल पेज में बहुत रैंडम चीजें थी. Then I realized कि इतना टाइम मैंने लगा के वो सब फीचर्स बनाए जिसको किसी ने कभी देखा भी नहीं. इतना आसान होता कि अगर मैं इसको पहले ही छोटा सा बना लेता और सिर्फ वो फीचर्स बनाता जो कि जरूरी है और फिर जाके मैं टेस्ट कर लेता तो कितना टाइम बच जाता मेरा. सो द लेसन नंबर 2 वाज डोंट ओवरबिल्ड, व्हिच आल्सो मींस कि यू शुड स्टार्ट स्मॉल, राइट? द थर्ड लेसन से पहले सबसे फॉर्चुनेट चीज ये हुई थी कि आई वाज आल्सो फ्रीलांसिंग एट दैट टाइम. तो देयर वाज अ पर्सन who came and he had a very similar demand. So he wanted a platform where people can post reviews and search by cuisine, but for UAE. So ideas आपके अपने होते हैं, so you have some emotional attachment to it. I also had some emotional attachment to it. So it was kind of really hard for me कि how can I just sell this to someone, ये तो मेरा business होगा और ये होगा वो होगा. Very immature, but yeah. So the third lesson that I learned from it was कि it's okay to pivot, and it's okay to pivot to a completely different uh, um, mindset of the product or requirements. So हुआ ये कि when I pivoted to what they wanted, I was able to sell this for that time around like 20-25,000 dirhams, which obviously when I was 13, 14 years old, but बहुत बड़ी बात है उस वक्त. Yeah, I was like that kind of money. Okay. So the third lesson was कि hard work रखा था अंदर and it didn't go in vain. ऐसा मैं नहीं कह रहा कि when if you spend a lot of time in building something, you will get a person who will be ready to pay you a lot of money. But lesson was कि just put in the hard work, you will get your reward for it. The news project में हो, it can be in other terms और technical skills में तो होता ही है. So then बहुत सारा time गुजरा. Now I was looking for real problems after Foodwise. A lot of years passed. I did not work on any project. Um, फिर came the idea of Discuss. Um, Discuss was a platform which I really wanted. So I wanted people to for me to be available जिनसे मैं अपने career की guidance ले सकूं.
So there were a lot of times when I had some decisions to take, जिसमें कोई apparent solution होता नहीं है. Let's say you have three companies who want to hire you, or there are three companies you want to apply to, but you're not sure if you should go there. One is a startup, one is a corporate. Startup में काम करें, corporate में काम करें. There are a lot of decisions जो कि at the start of your career, it's really hard to know कि यार what is good for me. And if I had access to people who are there, जिन्होंने ये already किया है, and it's really easy for me to just book 30 minutes, 1 hour session with them and just go ahead and ask them my questions. So discuss was for this. Discuss के अंदर everything was sorted. The problem was validated. The problem was real. The business model was also there because people charge for their talks, so they charge by the hour. So on Discuss, if a mentor wanted to have paid sessions, they can just have an early rate. Anyways, इसके अंदर प्रॉब्लम बड़ी यूनिक फेस हुई मुझे, जिससे अगेन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप व्हाट आई लर्नड वाज इवन इफ यू हैव एवरीथिंग सॉर्टेड, जरूरी नहीं है कि जो टारगेट ऑडियंस यू हैव चोजन has the resources to buy your product. So I was targeting early professionals or undergraduates. And obviously, they don't have money to pay for high profile mentors who $500 per hour charge करते हैं, $250 per hour charge करते हैं. So you need to know that your target audience has the correct purchasing power. The second most important thing was, even if you do have a good target audience, building the side project isn't the end. Executing it is really important as well. Now, this also comes under the category of if your side project is startup. So, having a good execution plan in mind will only make your side project succeed. वरना वो सिर्फ एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट ही रहता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग. हैविंग साइड प्रोजेक्ट्स का पहला मकसद ही है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, बिजनेस बन गया तो बहुत अच्छी बात है. सही. लेसन नंबर 3, अगेन जो पिछले वाले में बात हुई थी कि जरूरी नहीं था कि मैंने अगर वो प्रोजेक्ट बनाया तो इट्स मैंने उससे पैसे कमाए. जरूरी नहीं है कि मैं उससे पैसे कमाऊं. डिस्कस से मैंने बहुत अलग चीजें सीखी. आई आई लर्न हाउ टू मेक एन ऑडियो वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म, टेक्निकली. ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं डिस्कस बनाऊंगा तो मैं ये सीखूंगा, उसको सीखने के लिए बनाऊंगा. वो करते करते मैं ऐसा हुआ. माई पॉइंट इज कि वेन एवर यू हैव एन आइडिया यू शुड गो फॉरवर्ड विद इट. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे कुछ सीखें ना. द फोर्थ लेसन, डिस्कस को बनाने में मैंने 2.5 साल लगाए. साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. अब वो ऐसा नहीं था कि वो कंटिन्यूस 2.5 साल थे, बीच बीच में मोटिवेशन खत्म होती हैं, महीना काम नहीं किया, कुछ नहीं किया. तो उसके लिए होता ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सबसे स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड गो अहेड एंड बिल्ड दैट, which basically means you should be very 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 quick to prototype और जाके वो टेस्ट कर लो आइडिया मार्केट में if it's working. Even if it's not a startup, you should always start small. We'll talk about that. जो लास्ट लेसन, जो लास्ट केस स्टडी जो मैं बात करूंगा वो कोर्सेबल की है. कोर्सेबल में सब कुछ था, तो 2 हफ्ते में बना भी लिया. प्रॉब्लम वाज आल्सो वैलिडेटेड, प्रॉब्लम वाज आल्सो रियल, एवरीथिंग वाज देयर. द ओनली प्रॉब्लम इन इट वाज I did not understand or study my competition, or I was building a course platform, and I was obviously I won't be able to compete with Courseable, Teachable, stuff like that. So this was more of a startup related lesson. Okay, I need to know my market fit and I need to have a strategic plan. So Courseable was kind of more of a startup lesson than a side project related one. Now, if I talk about both of my case studies again, that were some examples, and the point of sharing those were my motivation for building side projects was to build a business, and that's why I learned my lessons in the business perspective of it. Your motivation can be really different. You can build side projects for a completely different reason. My point is, whatever that reason is, whenever you go and build a side project, you will learn something in that domain, for sure. So I'll just talk about 2 3 values of side projects that you will shortland whatever your motivation is. But side projects help in building career. If you keep on working your 9 to 5 job, even if it's not 9 to 5, any job that you have, and you do not work on anything else apart from that, you will not be able to progress as fast as the people who are working on side projects.
I'm a very good example of it because I've been working on side projects for a lot of time. And if I hadn't been doing it, I've 90% of the interviews that I'm able to crack, I won't be able to do that because I'm not familiar with the technology. So the only reason I was able to even apply on those jobs was because I already created some project on it and I was able to talk about it in my interviews. They gave me the right mindset of sorry the right technical skills to talk about those skills in my interviews. So, but a direct relation, if you are working on your side projects, that's the only way you can uh, build your career much faster than the peers that you have. The second reason is side projects build confidence. Now, I'm not talking about confidence as in your personal confidence, uh, your personality-wise confidence. I'm talking about the confidence to absorb pressure. It's not easy to work on side projects. आप 9 to 5 जॉब करते हैं, थक के वापस आते हैं, 1.5 घंटा शायद फैसल के ट्रैफिक में फंस के. It's not easy कि घर आके फिर वापस से time spend करें. Nobody's saying it's easy, but when you do that and you find that motivation to work, uh, and you find that consistency to work, and then when you complete that project, you see yourself that you were able to navigate through so many things in your life, and you were able to accomplish something. And then again, that gave you a great sense of achievement that, okay, I am able to handle this much pressure, right? So that is something that side projects boost you with. This confidence boost that you get is something also that you win after getting a competition, you know. But this is something that you achieve after having some consistency, right? The third most important thing I would say about side projects is building speed. Whenever you, so let's say you've built 4 side projects all on different technologies. Once you do that, you realize that hey, all of these technologies, even though they have different syntax, different terminologies, and everything, you recognize patterns. You know that okay, if I have to talk to a database, I need to create a model. A model is called something else in a different framework or completely different concept in some different framework. You know what to learn, right? So the speed that I'm talking about is not about typing speed or anything like that. It's about the speed of picking things up. So whenever you work, even as a freelancer, uh, you need to be good at picking things up because they can come up with, hey, I want to use this technology to build my product. So you'll be like, easy. Doesn't matter. I'm not afraid of new things. I know that I've learned a lot of new technologies before, and I know I can learn a new one because kya hi alag aa jayega aur. And even if there is, you now have the confidence to go ahead and learn it in a much faster, uh, at a much faster rate. So yeah, so these are the 3 things that are very generic, and I would really suggest that these 3 things are always there whenever you complete a side project. Um, just I would like to take an interlude here and include something that to make side projects, you need to be a full stack developer. This is one of the caveats. Until and unless you have some other people who will do the back end for you or the front end for you or stuff like that. But I would recommend that you should be able to handle it as a one-man show or one-woman show as well. So being a full stack developers being a full stack developer will take some time. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें ओके एक वीकेंड पे जाऊंगा 6 घंटे की वीडियो देखूंगा फुल स्टैक बन के फिर मैं बोलूंगा सही है बस हो गया मेरा. ऐसा कुछ नहीं होता. कुछ कुछ इतना आसान नहीं होता. Everything takes consistency and everything takes effort. So yeah, so basically we have this RST ready set tech cohort in which we are training people to become full stack developers. So if you are a front end or a back end specific engineer, you can sign up on Join RST. We'll have a 16-week course in which you will start from the very basics and we'll talk about scaling stuff uh, to a lot of users and stuff like that. And then also talk about resume review, portfolio building. So yeah, so please do check it out. I'm sure a lot of you guys will benefit from this. JoinRST.com. Right. So this brings me to the last section of my
session, and it's some steps that you can follow to create your side project. So I started my side projects from Help Exchange. I wanted somebody to design something for me. That was my why, right? What is something that I want? What problem do I want to solve? So yeah, that was my why. I want you guys to think about what is your personal pain point, what is something that you want and does not exist right now and will help you only. Just start with that. The second one is don't overwhelm yourself with okay social network बनाने का idea है तो Facebook ही बना. No, don't do that. Start really small, really 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 small. इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी छोटा है. Just start really small because if you start big, वो जो एक initial motivation that you get, there is always in every project, even in your professional life, whenever you start to do something, एक sudden surge of motivation होता है start में जो कि gradually सिर्फ decrease ही होता है. So use that very wisely. Initially जो वो motivation आ रही है, use that very wisely. उसको if you start small, you'll see more progress, you'll see more achievements, and then that will keep you motivated for a longer period of time. Then the third thing is pick your tools. So इसमें दो हैं. If you are going for a startup, do not go for something जो कि बिल्कुल नया है. Do not waste your time. Choose something that you're good at and go ahead with that. On the other hand, if you are building something for your portfolio, so Amazon जाना है और Amazon में let's say Golang की demand है. तो अब you go ahead and learn about Go and then use that in building your side project because again linking your skills to a project is really important. इसमें बस एक मसला ये है कि it requires a lot of consistency and it requires more work क्योंकि वो जो initial motivation है now that is going to go in learning the technology instead of implementing something. So that's why it requires more consistency. Then we have step number 4. जरूरी नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट बनाने गए हैं तो एक हफ्ते में बिल्कुल सब सही चलना चाहिए. बग्स तो आती ही हैं प्रोडक्ट. जब आज तक रिएक्ट में बग्स आते हैं तो फिर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें तो होंगे. तो यू डू नॉट हैव टू एम फॉर परफेक्शन एट ऑल. प्रोग्रेस दिख रहा है, दैट्स योर अचीवमेंट. Aim to achieve something by the end of the day every day. Automatically you'll move towards perfection day by day. This is something जो कि हो सकता है is very subjective for me, but all my ideas are very important for me, and it was hard for me to accept कि सारे ideas नहीं चलेंगे और obviously नहीं चलेंगे क्योंकि yeah. So if you are building for a startup, most of the times your ideas won't work और उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. That's okay. You can always pivot it to something that you think your market wants, or you can just also quit and then work on some other idea. Your time is not worthless. If you are spending an hour on building something, that's your 1 hour that you have spent of your life somewhere doing something. Usko worthless na samjhe. If you know that it's not going to work, just stop or pivot, right? So yeah, that was all from my side. If there's any question you guys want to ask me about anything, you can ask me right now, or you can also uh, hit me up on LinkedIn, Instagram, or even my phone. I'm open to everything. Thank you so much, guys.
आई यूज्ड टू थिंक द सेम कि बहुत सारे आइडियाज ऐसे ही जाने दिए कि गूगल किया, आइडिया है गूगल किया और फिर देखा कि ये तो पहले से ही हो रहा है. But I think those were very lost opportunities. I should have went ahead with developing them because again, side projects are something that you are doing for your own portfolio. Business बनाना है वो एक अलग बात है. But if you have some ideas जो कि पहले से बना हुआ है, great. It's already validated. उसके already customers हैं. Business बनाने की बात बाद में आ जाएगी. Just go ahead and build something that's already in production. Try to replicate it. It will make you understand a lot of intricacies जो in apparently सामने दिखते हुए systems लग तो रहे होते हैं, अच्छा एक छोटी सी वेबसाइट ही तो है, क्या हो रहा होगा. इट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्वड इन बिल्डिंग अ होल सिस्टम. सो आई एम ऑल फॉर having an idea and go ahead and going ahead and developing it. So yeah. Right. So, right. Very good. Mm. Definitely. So पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का इज हाउ टू फाइंड द मोटिवेशन टू डू इट, राइट. एक तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ. सही. क्योंकि अगर तो हम खाली ऐसी चीज़ें देख के बनाना शुरू कर दें कुछ जिससे हम डोंट रेजोनेट विद, जिससे हमें वो प्रॉब्लम अगर हमें फील नहीं होती, तो स्टार्ट तो हो जाता है, वो खत्म नहीं हो पाता, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम मोटिवेशन ढूंढ नहीं पाते. बट इफ देयर समथिंग जिससे यू थिंक कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ना इंट्रिंसिकली आता है कि यार नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन. ऐसा हो सकता है बीच में ड्राई फेजेस आए कि नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, फाइनल्स आ गए, समथिंग लाइक दैट. मेरे साथ भी होता था बहुत, एग्जाम्स के टाइम पे नहीं मिलता था टाइम. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो एक दो तीन दिन के लिए यू weren't able to work on it और दो तीन हफ्तों के लिए you weren't able to work on it, कोई बात नहीं. बाद में वापस से जाए उस प्रोजेक्ट पे, गो अहेड, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट इट ऑफ, और स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि एक होता है स्टार्ट में एक मोटिवेशन आती है और फिर वो खत्म होती है. बट इफ यू कीप कंसिस्टेंट, बेशक एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, दैट्स फाइन. जस्ट have some progress, automatically एक sense of achievement रोज रोज आएगा, and then you'll become consistent yourself. खुद ही से यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. I completely agree with that. But कभी कभी ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में, if you get some time, घर आके कभी कभी हो सकता है. But even if you're not, just make sure that you're working a little bit every day. So automatically that will come towards progress or perfection or completion. Second जो आपका था कि if there's something just where you can learn full stack. So ये full stack in itself ना, it's not just about learning a backend or a front end framework. वो सिर्फ इधर तक limited नहीं. Full stack is about understanding the product from user experience to what are the complications in handling backend at scale भी और normally भी. खाली framework सीखने से कोई full stack नहीं हो जाएगा. वो पूरा माइंडसेट एक होता है फुल स्टैक का. तो आई कैन टेल यू कि आप ट्यूटोरियल्स देख लें और फ्रेमवर्क सीख लें, बट दैट वुड बी थोड़ा सा गलत होगा वो बोलना. तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब. बट एक ये है ज्वाइन आर एस टी जिस पे आई एम वर्किंग ऑन. इफ यू वांट यू कैन पूरा पीडीएफ है उसके ऊपर, यू कैन डाउनलोड, उसके ऊपर पूरी आउटलाइन आ जाएगी ऑफ हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक. You can also join RST itself. There we are going to talk about becoming full stack, right? Yeah. Right.
सही है। तो जो पहला क्वेश्चन है ऑफ मार्केट को ये अवेयर कैसे कराएं कि भाई ये गैप एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इफ यू हैव टेस्टेड कि भाई ये गैप है, तो द ओनली स्टेप लेफ्ट इज क्रिएटिंग योर डिमांड, राइट। और वो कैसे होगी कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट। क्या वो एक ऐसी वैल्यू है जिससे लोग ये सोचते हैं कि हाँ यार, मतलब दिस इज समथिंग जो कि मिसिंग है, एंड दिस इज समथिंग जो कि मेरी जिंदगी बेहतर करेगा, दिस इज समथिंग कि जो मुझे फेस होता है एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर इट। क्योंकि देखो, उनको पे करने में मसला नहीं होगा अगर उनको इन रिटर्न उनका टाइम बचता हुआ दिख रहा है। सही है, दैट्स एज सिंपल एज दैट। लोग, पीपल आर विलिंग टू पे फॉर प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं इसीलिए बिकॉज हमारा टाइम बचेगा। सो मार्केट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। मार्केट करके डिमांड जनरेट करनी है, और वो डिमांड कैसे जनरेट होगी, ये सही से कन्वे करना है कि व्हाट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग। सही है। तो वो वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ सेविंग देयर टाइम, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सेविंग देयर मनी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग कि उनको रेपुटेशन डेवलप हो रही है, कुछ हो रही है। सो कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दैट सेपरेटली इफ यू वांट। जो दूसरा सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये चीज मैं भी बड़े डिलेमा में होता था यार कि कोड क्वालिटी अच्छी रखूं। अगेन टॉकिंग अबाउट अ स्टार्टअप, क्रिएटिंग अ स्टार्टअप, नॉट जस्ट अ साइड प्रोजेक्ट। इफ यू आर श्योर फॉर गोइंग फॉर स्टार्टअप, तो फिर आई वुड से कि डोंट, यू शुड नॉट केयर अबाउट योर कोड क्वालिटी इन द स्टार्ट। टेस्टिंग द मार्केट सबसे पहली प्रायोरिटी है। एमवीपी निकालो, टेस्ट करो। अगर द मार्केट एक्सेप्ट्स इट, देन यू हैव अ फुल फ्री हैंड कि अब उस एमवीपी को साइड पे रखो और फिर से डेवलप करके नाउ यू क्रिएट अ फुल प्रोडक्ट। बिकॉज नाउ यू नो कि अब जो तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे उसको क्वालिटी बनाने में, आर्किटेक्चर बनाने में, वो दैट वोंट गो इन वेन। यू नो पीपल आर वेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। यू नो दैट देयर इज अनएक्सपेक्टेड लोड, तो तुम्हें पता है आर्किटेक्चर होगा भी कैसा। A lot of things clear out after you know that the market exists, the market is willing to pay. Then you can go ahead and invest your time in creating the right architecture. Starting में जितनी जल्दी हो सके एमवीपी निकालो और मार्केट टेस्ट कर लो। So that's my opinion. Perfect. Yeah, right, yeah. Thank you. Right. So your question is कि क्या tools use करने चाहिए, right, to create your own side project. सही है। So इस पे दो पर्सपेक्टिव है मेरे। एक तो ये है कि if this is something that is developing, for example, let's say, तो अब उसके लिए प्रायोरिटी मार्केट में जाना है, राइट। और उसका साइड प्रोजेक्ट एक स्टार्टअप होना है। तो आई वुड से कि जिस चीज में यू आर वेल वर्स्ड, यू नो, अंदर बाहर से सब पूरा पता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, यू विल बी रियली फास्ट एट इट, तो गो विद दैट। अगर तो सिर्फ साइड प्रोजेक्ट की बात हो रही है टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, तो फिर आई वुड से कि look up those companies in which you want to work in, or look up those technologies that you are passionate about कि यार ये मुझे सीखना है। Then you can very safely go ahead, learn about them, and use that technology stack. जरूरी, अब जैसे यू आर सेइंग कि बहुत सारे लोग बात करते हैं जावा पे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। टॉकिंग अबाउट साइड प्रोजेक्ट्स ना, ये थोड़ी बात समझ नहीं आती, क्योंकि कंपनी में डिसीजन हो रहा होता है तो उनके बड़े अलग मेट्रिक्स होते हैं। उनको कॉस्ट देखनी है, उनको टीम की एक्सपर्टीज देखनी है। तो वो एक बहुत अलग बात है कि वो उनके लिए मैटर करता है कि यार जावा यूज करते हैं क्योंकि अभी बैकअप है, हमारे पास 4 जावा डेवलपर्स तो है। साइड प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें ना, तो ये दो ही है। स्टार्टअप बनाना है तो गो विद समथिंग यू आर गुड एट। अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो गो विद समथिंग दैट यू वांट टू लर्न, और गो विद समथिंग दैट योर कंपनी, योर प्रोस्पेक्टिव कंपनी वांट्स दो स्किल्स। तो उन टेक्नोलॉजीज को यूज करें। सो या।
Great. Islam. My point of view on raising funds for your startup. Ah, mhm. Right. So I'll just repeat your question because वो stream पे शायद नहीं आ रहा है. So your question basically is कि what is my opinion on startup accelerators भी इनको कहते हैं या incubators भी कहते हैं जो कि fund भी करते हैं and they also provide you with resources to build your startup. आई वुड से कि काफ़ी सो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है ना वो आपको नेटवर्क का मिलता है। सो यू आर देयर विथ योर स्टार्टअप एंड देन यू सी के ऐसे 10-12 लोग और हैं तो व्हिच आर देयर टू प्रमोट देयर ओन स्टार्टअप और बिल्ड देयर ओन स्टार्टअप। तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो एक जो कम्युनिटी आपको मिलती है वहाँ पे दैट बिल्ड्स योर नेटवर्क और प्लेसेस लाइक नेस्ट आईओ वगैरह दे हैव लॉट ऑफ पीपल हु कम इन एंड देन गिव टॉक्स राइट तो जहारा वगैरह जैसे हैं really big names in the Pakistani tech market. So if you get to network with them, सबसे बड़ा तो फायदा इधर ही हो रहा है क्योंकि there is also a saying that network is your net worth. So सबसे पहले तो these platforms are providing you with your network. On top of it, if you actually qualify for their cohorts, तो सिर्फ फायदा ही है उधर. Especially if you are still in the early stages of your career. So if you are a university student या फिर बिल्कुल early professional, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर स्टार्ट में मिल रही है तो इट विल टीच यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव सीन सम स्टार्टअप्स जो कि ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम नेस्टायो और अभी उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है और दे आल्सो हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ टूल्स जो कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दीज इंक्यूबेटर्स यू वोंट हैव राइट अभी बहुत सारे उनके ऐसे दोस्त हैं जिनके थ्रू दे गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दे गेट टू लर्न अबाउट द स्पेसिफिक डोमेन टेक्नोलॉजी लर्न करने से आपका बिजनेस ही बन जाएगा यू नीड टू नो कि जिस डोमेन में आप जा रहे हैं यू नीड टू नो अबाउट that domain too. So again, they will provide you with the resources to expose yourself to those kinds of people and a very great learning opportunity in these areas. एक बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी वाई कॉम्बिनेटर है जो इंटरनेशनल लेवल पे करता है and उधर से क्रेजी स्टार्टअप्स निकलते हैं वहाँ से कंपनीज सो या ऑल एंड ऑल इट्स रियली ग्रेट दैट इज आल्सो ट्रू communities like PWIC भी they are actually helping the current tech market and being a part of the community जो कि काम करना चाहती है नेटवर्क करना चाहती है that is true. And do we have more questions? Mm, I think then that is it. If you guys have any more questions, you can always reach me out किसी भी social network पे or even on my phone. I'll be always there to help you. So thank you guys for attending the session. I hope you learned something and hope to see you all very soon. Yeah, thank you so much for inviting me. Thank you guys. Thank you for joining.
laugh is